तो चलिए अब फोकस करते हैं टाटा कम्युनिकेशंस के नंबर्स पर एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्ट्रॉन्ग एंड बेटर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स. Quickly I'll run you through the numbers. Revenue is up almost 15.6%. EBITDA is up almost 11.6%. Margin 20.1% पर आया है. Street estimates कम थे तो clearly यहाँ पर beat है. And PAT is at 45 crores. Exceptional loss, of course, we have to factor in of about 185 crores as interest on tax with respect to the license fees. बट खास बात इस क्वार्टर में रही वो ये है कि कंपनी ने सरपास किया है 5,000 crore rupees of revenue milestone and data revenue was particularly the highlight. 15.5% यहाँ ग्रोथ हुई है on quarter on quarter basis. पर well, let's deep dive into the numbers. और मेरे साथ इस वक्त कंपनी के CFO कबीर अहमद शकीर जुड़ रहे हैं जो हमें इन नंबर्स पर और डिटेल्स देंगे. कबीर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस. नंबर्स अच्छे हैं सर, क्लियरली बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स. तो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या रहे आपके हिसाब से? थैंक यू स्वाति मुझे बुलाने के लिए. नहीं, हम बहुत खुश हैं नंबर से. पहली बात तो ये है कि हमने 5,000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है. डेटा रेवेन्यू 4,000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है. कलेरा का एक्विजिशन अक्टूबर 6 तारीख को क्लोज हुआ था, तो ऑलमोस्ट पूरा क्वार्टर का इम्पैक्ट हमें मिला है. इसकी वजह से हमारा डेटा रेवेन्यू 4,618 करोड़ पे हुआ है. मगर कलेरा के अलावा भी अगर हम देखे जाए तो ऑलमोस्ट 3,800 30 करोड़ के करीब हमारा डेटा रेवेन्यू आ रहा था. तो इवन विदाउट कलेरा हम एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर में वो 4,000 मार्क वैसे भी क्रॉस कर रहे. तो ये रेवेन्यू क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कुछ ही क्वार्टर पहले हमारा जब इन्वेस्टर डे, एनुअल इन्वेस्टर डे हुआ था, उस इन्वेस्टर डे में हमने क्लियरली बताया था कि हमारा एम्बिशन हमारा डेटा बिजनेस को डबल करने का है. तो उसके बोलने के तुरंत बाद ही हमने कलेरा का एक्विजिशन अनाउंस किया और उसको बहुत जल्दी, पहले हमने सोचा था कि 9 महीने लग जाएंगे यूएस लिस्टेड एंटिटी को खरीदने में, मगर हमारे टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया. जब हमने अनाउंस किया और जब हमने क्लोज किया, 3 से 4 महीने के अंदर हमने ये ट्रांसैक्शन को कम्प्लीटली क्लोज किया था. तो हम बहुत खुश हैं इसके मुकाबले. दूसरी बात, अगर आप प्रॉफिट का देखा जाए, मार्केट का एस्टिमेट्स कलेरा का नंबर्स हमारे नंबर्स के जोड़ने से एस्टिमेट 17-18 के बीच में था. मगर पहले ही क्वार्टर में हमने थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स देखे थे कलेरा के कॉस्ट स्ट्रक्चर में. एक तो वो SEC रेगुलेटेड न्यूयॉर्क लिस्टेड कंपनी था, तो इसके एसोसिएटेड बहुत सारे कॉस्ट होते हैं लिस्टिंग के एसोसिएट. वो कॉस्ट हमने तुरंत क्लोज करने के 10 दिन में ही हमने हमारा डी लिस्टिंग करा दिया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से. उसकी वजह से बहुत सारे कॉस्ट हमें बच गए. D&O इंश्योरेंस वो बहुत थोड़ा महंगा होता है स्पेशली फॉर US लिस्टेड कंपनीज. ये सब हमने कॉस्ट सिनर्जीज को फास्ट ट्रैक किया ताकि ये वेस्टेड कॉस्ट सब जल्द से जल्द निकल जाए. तो एबिटा हमारा ये लक्ष्य था कि हम नियर टू शॉर्ट टर्म एबिटा ब्रेक इवन करेंगे. हमने पहले ही क्वार्टर में कर दिया. हमारा एम यह है कि मीडियम टर्म में इसको डबल डिजिट एबिटा पे लेके आए. वही हमारी कोशिश रहेगी. So I think जो रीजंस आपने बताए अच्छे नंबर्स के वो क्लियर हैं. अब इम्पोर्टेंट बात ये आपने जैसे मार्जिन्स की भी मैं बात करना चाहूंगी. दैट particularly street was very excited about 20.1%, जो कि एस्टिमेट से काफी हाई है. एज यू नो 17% एक्सपेक्ट करा जा रहा था. तो यहाँ पर क्या खास फैक्टर्स रहे दैट यू गॉट गुड मार्जिन्स, एंड क्या आप 23 to 25% का मार्जिन रेंज रीच करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? 23 to 25 हमारा लॉन्ग टर्म एम्बिशन है. इस धंधे को मुझे 23 to 25 में ही चलाना है. हम कोविड के दौरान थोड़ा सेविंग्स आया था, तो हम 25 के ऊपर भी जा चुके हैं 1-2 क्वार्टर में. तो हमने क्या किया कि उस मुनाफा, उस कैश फ्लो को उठा के हमने री इन्वेस्ट किया स्विच खरीदने में, जो बिना एक पैसे एक्स्ट्रा डेट के हमने स्विच 60 मिलियन में 59.8 मिलियन इज व्हाट वी पेड फॉर स्विच. वो खरीदा था उसको. और कलेरा इज अ बिगर नंबर, तो थोड़ा डेट ऊपर गया है.
मगर हमारा एम्बिशन ये है कि हम वापस 23 to 25 रेंज में आएंगे। ये इसके बावजूद कि हमारा डिजिटल पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% आ जाए। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर हमारा डिजिटल पोर्टफोलियो 45% आ चुका है। कोर कनेक्टिविटी 55 है, डिजिटल पोर्टफोलियो 45 है। और और हमारा और डिजिटल पोर्टफोलियो का एबिटा मार्जिन प्रोफाइल कोर कनेक्टिविटी से बहुत ज्यादा कम है। कोर कनेक्टिविटी ऑपरेट होता है 46 to 48% पे। डिजिटल पोर्टफोलियो अगर आप देखे जाएंगे मोस्ट ऑफ देम आर आई वुड से नेगेटिव टू सिंगल डिजिट एबिटा प्रोफाइल पे। वो अपने डेस्टिनेशन मार्जिन प्रोफाइल पे 2-3 साल में जब आ भी जाएंगे तभी भी डाइल्यूटिव इफेक्ट होगा कोर कनेक्टिविटी के मुकाबले। मगर फिर भी इन दोनों को कंबाइन करते हुए भी हमारा ये एम्बिशन है कि हम 23 to 25 के रेंज पे ऑपरेट करेंगे। तो होपफुली 2-3 साल में हम वहां तक पहुंचाएंगे। 2-3 साल में बिल्कुल ऑन कोर्स है और अचीविंग दैट नंबर। डेटा रेवेन्यू सेगमेंट, और मैंने इसकी बात शुरू में भी की है, 15% ग्रो किया है सिक्वेंशली, जो हमने अच्छी ग्रोथ भी देखी है। इसकी परफॉर्मेंस आगे कैसी दिख रही है? व्हाट इज द आउटलुक अहेड फॉर दिस सेगमेंट सर? स्वाति, डेटा सेगमेंट इज आवर फोकस। हमारा फोकस यही है। हमारा जब हमने जून में बताया था कि हम डेटा सेगमेंट को डबल करेंगे, तो ऑब्वियसली 18% के अगर वर्कआउट होता है कि हमने जब 3 से 4 साल में हम डबल करने की जब बात की थी, हम तब कलेरा वाज ऑलमोस्ट नॉट डिसाइडेड एट दैट टाइम व्हेन वी मेड दैट अनाउंसमेंट। मगर कलेरा अनाउंस होने के बाद हम थोड़ा फास्ट ट्रैक हो गए उसमें। मगर कलेरा का नंबर हटाऊं तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमारा डेटा और अदर पोर्टफोलियो हैज बीन प्रेटी मच फ्लैट। एंड डिजिटल पोर्टफोलियो उतना ग्रो नहीं किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट्स ऑल द मैक्रो इफेक्ट्स दैट यू एक्चुअली सी इन द यूएस इकोनॉमी। डिसीजन मेकिंग डिलेड हो रहा है हमारे कस्टमर से। ऑर्डर बुक और फनल हेल्दी है, मगर बावजूद वी आर सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लो डाउन। सो मैं सिर्फ एक क्वार्टर मत नहीं देखूंगा, देखूंगा कि वाईटीडी परफॉर्मेंस हमारा डेटा और डिजिटल पोर्टफोलियो का कैसा रहा है, and it is in line with our expectation, so we are quite happy. This is where our focus is going to be, to continue to focus and get this growth going up. यही डिलीवर करेंगे ग्रोथ आगे, फोकस भी यहाँ पर स्ट्रांग है। क्विकली आपका कैपेक्स में जाना चाहूंगी फॉर FY25 FY26। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आप करेंगे? क्योंकि आपने कुछ अपने प्रेजेंटेशन में बात की है टू मैक्सिमाइज एंड you'll see multiple levers to maximum value from both organic and inorganic opportunities or investments. So थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे what areas and specific segments are you looking at when it comes to acquisitions, और कैपेक्स टोटल लाइनअप कितना है over the next 2 years? There are multiple questions in your one question, so let me break them down into one by one. I would say Swati, first for the organic capex, I want to reach around 300 million of organic capex, because that's the 300 million that supports a consistent double-digit revenue growth. So we need to get there. In the pandemic, if I actually go back, we cut down on capex. That was the responsible thing to, वो सही था। हमें कैपेक्स उस टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि हमारा ग्रोथ का उतना विजिबिलिटी नहीं था। हम फ्लैट ग्रोथ पे चल रहे थे ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। जब वी आर गेटिंग बैक इनटू डबल डिजिट ग्रोथ, वी स्टेप्ड अप आर कैपेक्स स्पेंड। मगर वो कैपेक्स स्पेंड आपको P&L में दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि सप्लाई चेन डिलीवरीज डिले हो रहे थे, और जब हमने अप्रूव कर दिया, परचेस ऑर्डर भी रिलीज कर दिया, मगर डिलीवरीज नहीं आए तो हमने पेमेंट नहीं की थी। आज वो डिलीवरीज आ रही हैं तो हम उसका पेमेंट आ रहा है, तो आपको इस क्वार्टर में इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर से ही आपको थोड़ा कैपेक्स में अपटिक दिख रहा है। तो हमारा गाइडेंस रहा कि हम 250 to 300 के रेंज में ऑपरेट करेंगे इस साल में, तो वी विल बी इन दैट रेंज। बट अगले साल से आई एम होपिंग दैट वी विल इंच द कैपेक्स अप। Now, कहाँ पे हम स्पेंड करेंगे? We will spend, of course, in core connectivity space, because बहुत सारे हमारे अंडरसी केबल्स जो हैं वो 20 साल हो चुके हैं, तो they need replacement and they're coming up for retirement. So वहाँ पे खर्चा होगा। Plus in the new age businesses, in Move, in IoT, in media, and I'll talk about Switch जो हमने acquire किया है, या अभी जो कलेरा हमने एक्वायर किया है, इस प्लेटफॉर्म में व्हाट वी वांट टू इन्वेस्ट।
तो यहाँ पे we will continue to step up the investments, of course with an eye on ROI. So that's the bit on on capex per se. On inorganic, my whole point is we have spent money on Switch, we have spent money on Kalera. The green shoots are good, the progress is is good. We are happy with what we have, but we have not extracted the full value. So revenue synergies are there in Kalera. We need to get the revenue synergies. Integration we need to do because we have Digo and we have Kalera. Soon we will have one offering to the customer. And therefore, when we do all of that, then we're going to have a powerful, we're creating a new category called customer interaction suite. So no CPaaS, anymore. We're moving to this new category where we will have Digo, we will have InstaCC, and we will have Kalera all coming together, into this platform called, or the offering called CIS. And therefore, just there's a lot of complementarity. जो Kalera markets में हम present नहीं हैं, हमारे markets में Kalera present नहीं है. Lot of customers are complementary. अगर हम Kalera के customers को Tata Communications के product sell करें, और Tata Communications और Tata Group में Kalera को sell करें, तो ये revenue synergies है. So यही बता रहा था कि मैं there are multiple levers for me to extract more juice out of these inorganic investments. Clearly जो acquisitions हुए हैं in the past that have to be leveraged fully, जैसा आप बता रहे हैं उसमें ही बहुत potential है, but you have your eyes open out there to look and scout for good prospective businesses, right, sir? Absolutely. Okay. Absolutely. Quickly, मैं आपसे जानना चाहूंगी as the CFO of the company, I know आप अपनी balance sheet को जितनी strength और robustness के साथ always देखते हैं, जो नॉन कोर एसेट्स हैं कंपनी के पास, उसमें से आप कंप्लीटली एग्जिट हो गए हैं, क्या प्रोसेस है इस वक्त? जो लैंड बैंक है कंपनी के पास, उस पर क्या अपडेट है? बिकॉज इन्वेस्टर्स डू आस्क अस दीज क्वेश्चंस, सो उस पर क्या आप बताएंगे हमें? See, on the non-core assets, I'm looking at subsidiaries. This quarter, we've announced that, it's not about just, I would say, exiting businesses or selling businesses. That's also a possibility, and I'm not discounting that. But one of the, last quarter, हमने बताया था कि we will do a strategic review of all our assets. As a result of the strategic review, we have a large telecom operator with which we have a very large contract in our subsidiary TCTS. We have exited that contract. That will have an impact on the top line. And our top line will come down next year as a result of that. But what will be left over is a healthier business. Yeah, because we've been making losses there, in that contract, and it didn't make any sense for us to continue, any further. Likewise, we will do a strategic review of every other portfolio that is not performing, within Tata Com, whether they are sitting in a subsidiary. Yeah, whether they're sitting in a subsidiary or internally. We will definitely, do that part for sure. Coming to your question on land, ideally, this is my ideal wish. I would like to marry the timing of the land monetization with the use of those proceeds. Internally, we talked about higher capex, to drive business growth. We talked about new targets that we may want to have, in the business. Ideally, I would like to use whatever money I have in my own balance sheet trapped as a land. At the end of the day, I'm not a real estate company. I'm not a landlord. I'm, here to provide digital, solutions to my customers. So, my balance sheet should reflect my vision. The balance sheet assets, cannot be lopsided towards land, and not towards those assets that generate the revenue in line with my vision. So that's why I said my ideal wish is that I start monetizing in line with the requirements of the business. Few months it could be either udhar, so we will manage with debt, because we have a strong balance sheet and we have ability to. Fair enough. But इस वक्त अगर हम total land bank की value देखेंगे तो approximately कितनी है? मैंने count नहीं किया है, मैंने वो बताया नहीं स्वाति, because you know how real estate is, right? Sure. मैं आज बेचने नहीं जा रहा हूँ. ये एक अच्छा समय भी है, because the real estate has really bounced back, done a phenomenal job last 2 years से. So I think maybe the timing in that sense could be right, and you can fetch good. No, I'll tell you why I'm not saying that is the lot of land parcels we have. Some hygiene needs to be done.
Fair वो enough. quite a few properties are there still in the name of OCS. Some of them are still in the name of That VSNL. I keep hearing. Some of them still have land classification that has not been changed in the land records, in municipal records. My real estate team is on overdrive. You know, they are trying to first change all of that, and only when that get changed, and when I actually go in, like I'll give an example. One of the property I'm planning to sell. When we did the valuation about 18 months ago, and we were not ready to sell 18 months ago, we are ready today, to sell that. The value that I have today is 30% higher than the value I had 18 months ago. Good you waited. So, I know, but it could have been the other way also, right? So that's the reason why I don't want to indicate any value, because I know I will be wrong. So that's another important element of the business. अगले 2-3 साल आपको लगता है chunk of your land bank asset monetization will happen, sir? Since you said ये overdrive पे. Yeah, no, overdrive in cleaning the titles, but there are 2 big land parcels, and they are very, very big, land parcels. Then you need to find the right buyer as well, who can give you the right value. So, they are more in a 4 to 5 year time horizon, not a 2 to 3 year time horizon. Wonderful. That's a great clarity. Thank you so much, Kabir. आपने हमारे साथ समय दिया और हमें बताया नंबर्स पर, और आगे मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी का क्या आउटलुक है, किस तरह से ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी देख रही है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you very much, Swati. Bye.